Yes, ma'am. Okay, good morning, students. Good morning, ma'am. 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 When I ask questions, only then you rest, mute yourself so that the class don't get disturbed. Okay? So, क्या बनेगा खाना कब दे G. Okay? आज हम करेंगे लेटर G की हैं? two sounds. Many letters have two sounds. बहुत सारे letters ऐसे हैं इंग्लिश में जिनकी two sounds होती है. But today only we will do letter G. Okay? Everybody knows G for grades. You are in class 2 now. You are big students. मेरा किसी को बोल दो जल्दी वो बुलाना आएगा Sounds of letter G. Okay? ये भी उसको बोल दो। So first of all, do you have any idea कि letter G की two sounds कौन सी है? Do you have any idea? Ma'am, correct side, please. Yes. Sure. You will not write anything. Ma'am. Yes. Ma'am, Letter G sounds कौन सी है? Ma'am. Yes. Two grapes. Do you have any? Oh, okay. I will tell you. Okay. First of all, what is the date today? 11th July 2023. Okay. Day is Tuesday. It is 1111. Month is July and year is 2023. We are going to change two sounds of G. Letter G की two sounds होती है. One is j and one is g. कौन सी two sounds होती है? j and g. कौन सी sounds होती है? Ja. Ja. And g. And g. Are words which start with लेकिन जो भी साउंड होती है वो ज आती है and there words also starts with e जो sound so there are two sounds one is j and the other is g okay letter g की two sounds है j and g till here clear यहाँ तक सबको clear हो गया Yes, ma'am. यहाँ तक सब Okay, ma'am. now check Yes, ma'am. sounds of letter G. Yes, ma'am. Ja. Tell me two sounds of letter G. Ma'am, ja and ja and ga. Very simple topic. Okay. J and G. Good morning, Tisha. Join class. Repeating, join class. Okay. So we will start with first sound. अभी हम letter G की first वाली sound से start करेंगे, ठीक है? तो letter G की जो first sound है, वो है j, j. और ये कौन सी वाली sound है? Sound. कौन सी sound? And what you said, I can hear. Yes, बेटा. I can hear. What you said? Now mute everybody yourself. Ma'am, please sign. Now, bacha, mute yourself and look on board and let ma'am speak, okay? Then you will clear your doubts. Fine?
हम पे लेटर जी की 2 साउंड्स है and we have classified that sounds. Okay, one is soft and hard. Okay, each sound is soft sound. We have 2 sounds, soft and hard. Soft and hard. So this soft लेटर जी की जो है वो क्या है, सॉफ्ट साउंड है, एंड जो ग साउंड है दैट इज हार्ड. ग इज हार्ड. ओके, नाउ स्पीक. Excuse me, ma'am. Speak ग. दिस इज Ma'am, excuse me, ma'am. ग पे Ma'am, कम पड़ रहा है. इट्स ज. excuse me, ma'am. सॉफ्ट. Ma'am, excuse me, ma'am. Hard. Till here, you all understand or not? Ma'am, अभी है. Excuse me, ma'am. I also. Yes. Ma'am, please get silent. Yes, you can. I'm giving you 1 minute. Please till here. Ma'am, we want to write also. If you want to write, you have 2 minutes. If you want to write, otherwise it's not compulsory to write. You can just look on board, read it also. Okay, I'm giving you 2 minutes. You can read it or write it. It's your wish. 2 minutes. Ma'am, please get silent. Everybody, kindly unhide your video. Okay. So again, now mute yourself. Again, I'm explaining you. Letter G has 2 sounds. Letter G की 2 sounds है. Okay. It is classified in Ma'am, soft, right. hard. मैंने म्यूट कर रहा तो soft है, मैंने बोला म्यूट कर sound रहा है, वो hard sound है. जो soft sound है, वो है ज. Ma'am, right. That is g. Okay. Hard sound is g. Let's start. अब हमको पता कैसे चलेगा कि जो लेटर जी है उसमें ज साउंड आएगी या ग साउंड आएगी? हमें कैसे पता लगेगा? हमें इजीली पता नहीं लगता ऐसे. So we one rule जिससे हमें पता लगता है कि ज साउंड आएगी कि ग साउंड आएगी. Now look on and move yourself. Okay. Okay. Then with letter G, जहां भी कोई वर्ड लेटर G से स्टार्ट होगा, अगर उसके साथ लेटर G के साथ लेटर E, I एंड Y आता है, E, I एंड Y आता है,
Again I'm repeating, अगर लेटर G के साथ E, I and Y इन तीनों में से कोई भी एक लेटर आता है, G के साथ लेटर E, I, Y इन तीनों में से एक लेटर आएगा तो जो साउंड होगी वो ज होगी, सॉफ्ट साउंड। जो साउंड होगी वो ज होगी, सॉफ्ट साउंड। ओके, वहां पे ग साउंड नहीं होगी। जब लेटर जी के साथ लेटर ई, लेटर आई, लेटर वाई कोई भी एक लेटर आएगा तो जो साउंड होगी वो ज होगी। कौन सी साउंड होगी? Excuse me, ma'am. Yes, बच्चा, you want to ask anything? Yes, ma'am. Ma'am, अगर we want to write, only write Ganja. Don't hide. And who's this Priyanka Singh? Please unhide your video. Actually, I want to see what the kids are doing. Are they listening to me? That's why I'm saying please unmute, unhide your video. Priyanka Singh, ma'am, please. Yes, I want to see everybody is studying or not. Okay, it's you, Ishan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So, when letter E, I और Y comes with letter G, तो क्या साउंड आएगी? ज की साउंड आएगी। चलो स्टार्ट करें। Have you Yes, heard the word gym? आपने वर्ड सुने gym? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें लेटर Yes, ma'am. कौन सा? Yes, ma'am. उसके बाद क्या था? लेटर Y। लेटर G के साथ कौन सा लेटर आ रहा है? लेटर Y। तो यहाँ पे साउंड क्या आ रही है? ज। What is the sound of G here? अब नेक्स्ट देखो GIANT GYM. इसके नीचे giant। नाउ इसमें लेटर G के साथ कौन सा वर्ड आ रहा है? कौन सा लेटर आ रहा है? लेटर I। कौन सा लेटर आ रहा है? मैम लेटर आई। मैम लेटर आई। तो G की साउंड क्या होगी लेटर I के साथ? जो आएगा। जो वेरी गुड। जो G की साउंड होगी वो होगी ज। नेक्स्ट इज अभी जाते हो तो आपको क्या कैच करता है? जर्म। जर्म्स इज एन इन्फेक्शन ना। आपको क्या कैच करता है? जर्म्स। तो यहाँ पे जी के साथ कौन सा वर्ड लेटर आया? जो मैम मेरे को साइड वाले वर्ड्स नहीं दिख रहे। Which letter comes with letter G? GYME। लेटर ठीक है। जो लेटर ई आ गया लेटर जी के साथ, तो जब भी G के साथ E, I and Y होगा
कौन सी साउंड आएगी? ज साउंड. ओके, टिल हियर एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम डन. नो मैम. Good. मैम Very डन. good. डन Now, मैम. next. डन मैम. डन मैम. Okay, डन मैम. Just listening. now we will move on to next sound. ठीक है, अब हम next डन sound पे move करेंगे. You all will mute yourself. जब मुझे जरूरत होगी I will let you know. Unmute you. अब हमने soft sound कर ली. soft sound है ज. अब हम करेंगे hard sound. जो letter G है उसका hard sound. तो letter G का hard sound क्या है? It's g. g. लेटर जी का हाथ साउंड है ग. ग से गमला होता है ना, ग. अब ग साउंड कब और कहाँ आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, ग साउंड कहाँ पर आएगा? जब जी के साथ, लेटर जी के साथ comes with letter A, letter O, letter U plus any other letter. जब जी के साथ लेटर ए आएगा, लेटर ओ आएगा, लेटर यू आएगा या कोई भी और लेटर आएगा, बस ई आई वाई को छोड़ के, लेटर ई आई वाई को छोड़ के जब जी के साथ कोई भी लेटर आएगा तो जी की साउंड हो जाएगी ग. कौन सी साउंड हो जाएगी जी की? ग. 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 Very nice. जब ए ओ और यू आएगा. ओके, so let's start. See which letter is this? What is this? I'm writing on board. Ma'am, gap. Gap. अब Ma'am, देखिए, gap. अब Ma'am, gap. अगर मैं इसको गैप बोलूं तो कैसा लगेगा? अगर मैं इसको गैप को, इफ आई प्रोनाउंस वर्ड गैप को जैप, तो क्या अच्छा लग रहा है? इट्स रॉन्ग ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. ए और यू, जब भी जी के साथ ए आएगा, ओ आएगा या यू आएगा तो ऑटोमेटिकली जो साउंड है जी की वो ग हो जाएगी, हार्ड साउंड हो जाएगी. ठीक है, गैप. नेक्स्ट इज गेम. नेक्स्ट इज गेम. नेक्स्ट क्या है? गेम. अब अगर मैं इसको गेम की जगह जेम बोलूं, जेम, तो क्या सही होगा जेम? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. गेम क्या होगा? राइट, इट्स गेम. ओके, Yes, ma'am. अच्छा यहाँ पे who will tell me कि जी की साउंड में ग क्यों आया? चल ना, यहाँ पे जी के साथ ग क्यों आया बेटा? मैम जी के आफ्टर मैम ए आया. जी के साथ में ओ और यू जब भी आएगा तो जो जी की साउंड होगी वो ग हो जाएगी, इसलिए ये हो गया. इसमें जो साउंड आएगी की. ओके, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देखो. Shall I rock the boat? Shall I rock? Yes. Excuse me, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी मैं Excuse me, ma'am. आपको
बिल्कुल भी बात नहीं करना। Yes, Mama. Yes, please. No mama in class. Keep quiet. Okay, so is that clear? जो मैम ने बोर्ड पे लिया है कि जी की दो साउंड्स है, एक है ज और एक है ग। ज साउंड सॉफ्ट है, ग साउंड हार्ड है, और जो ज साउंड है वो कब आएगी? जब जी के साथ ई आएगा और वाई आएगा। Okay, ma'am. ग साउंड कब आएगी? जब जी के साथ ए और यू आएगा, ठीक है? Is that clear? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. No. Ma'am, मुझे समझ नहीं आ रहा. अब हम Yes, ma'am. कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है? और फिर एंजल, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा. एंजल में ज आएगा या ग आएगा? लिखो A N एंजल ज और अगेन नेक्स्ट इज एंगल. टेल मी. मैम go G, angle, G. Very nice. Next is gem. Gem. मैम J और मुझे याद है. comes in J or J. मैम जो Very nice. मैम जो Very nice. And the word good. आपको देती है ना, when you do good, when you write nicely, when you do work nicely, मैम आपको good बोलती है ना? So जो good है वो ग है कि च में आएगा? Tell मैम. जी Good. 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 जो सॉरी G. It will come in G. Okay. Now I will show you one video. Go. गुड तो बोलो. Companies have fired more than 380,000 employees this year itself. This is happening because of rise of AI and AI tools like ChatGPT. But AI won't replace you directly. A person using AI will. A person using AI is not only going to replace one, but 10 people. Why so? That person is going to be 10x more efficient and 10x more productive. So the best thing you can do right now is learn art of using ChatGPT and other AI tools. Hi, my name is Aditya Kachar. Nobody will write on whiteboard. Nobody will write on whiteboard, students. The letter G has two sounds,
One is J and the other is G. The word goat starts with a G sound, whereas giraffe starts with a J. The word gum has a G sound and gym has a J sound. To avoid confusion regarding the soft I have already told you the rules. Rules में हमने आपको बता दिए हैं कि ज साउंड सॉफ्ट साउंड है और वो तब आएगी जब जी के साथ ई आई और वाई होगा, एंड जो ग साउंड है हार्ड साउंड है, इट विल कम विद ए ओ एंड यू. ओके, and the hard G, we have a spelling rule. If the letter after G is I, E or Y, the G makes a J sound. We call it the soft G. If the letter after G is A, O, U or any other consonant, the G makes a G sound and it's called as the hard G. To make our kids remember this rule in an easy way, we use the term giant in a garden. A giant once went into a garden to pluck some flowers. He plucked the flowers named I, E and Y and he left all other flowers in the garden. Let's look at some words. The word now there are some words. Okay, examples and कुछ G, J and G के. It's gold, G old, gold. So it is starting from G, क्योंकि G के साथ यहाँ पे क्या आ गया है? Letter O. And next is gem, J-M, gem. तो यहाँ पे why gem is from J, क्योंकि letter E आ गया है. Letter E किसके साथ आया है? G के साथ. gold begins with G and it has an O next to it, so it says G. The word gem begins with G and it has an E next to it, so it says J. Now let's find the G in the words below and decide what sound it makes. Glass begins with G and it has an I next to it, so it says G. Gel also begins with G but it has an E next to it, so it says J. Now see, glass is starting from G and gel is starting from J. क्योंकि glass में G के साथ A आ गया तो वो G साउंड आएगी. जेल में G के साथ E आ गया, E I Y होता है ना, तभी J आएगा. So it's gel. J. In the word garlic, the G is followed by an A, so it says G. In the word ginger, the G is followed by an I, so it says and the ginger are also starting from different letters. J and G. Garlic, G, because G के साथ A है. And ginger, J, because I is with G. J. Let's see some examples for soft G words. Hedge, engine, germ, badge, magic, vegetable. These are some examples for hard G words. Goose, dog, dragon, gorilla, hug, grapes. Words ending with GE always has the J sound. Examples include orange, bridge, cage, badge, judge, fridge. Some words have both the hard and the soft G. Examples include gate, So you have to just look कि ये hard G है कि soft G है. Okay? So you have understood? आपको समझ आ गया? Okay, wait, I have done the setting. Oh, wait. garage, geography,
Yes, This- please. आप